artificial hair growth for many years, and the irregular bleeding has been progressively getting worse during past 6 months. And he has no other significant personal or family history. On TVS, abdominal thickness is 11, endometrial thickness is 11 mm and bilaterally enlarged ovaries. As we all know, these are the complaints with which the patient presents to us in our setups for polycystic ovarian syndrome, and it's become very easy for us to diagnose them immediately because these complaints are very typical and they're suggestive of the diagnosis. Okay, as we know that there is a comparison, sometimes we call it as a polycystic ovarian disease and sometimes we call it as a polycystic ovarian syndrome. Syndrome means that multi-systems is involved and multifactorial things are there. Polycystic disease is basically confined to ovaries, but the syndrome extends a little bit more and it becomes, empirical approach is changed and we have to exercise our own decisions to tackle it quite properly. Then we come to the pathology. What causes polycystic ovarian syndrome? Okay, if I move it aside, uh, is chronic anovulation. Gonadotrophins and sex steroids are in steady state, resulting in anovulation and infertility. There is no corpus luteum to produce progesterone. The unopposed estrogen makes the endometrium hyperplastic and causes irregular bleeding. As we know that in the ovary there is a normal cycle in which a Graafian follicle starts getting mature and it becomes a ripened follicle, and thereafter the eggs get out of it and the follicle gets converted into corpus luteum, and corpus luteum is responsible for the production of progesterone, and that progesterone in return makes the endometrium capable of embedding any pregnancy. It becomes soft, it becomes thick, and it's get ready for receiving any sort of pregnancy which is about to be there if she's married. And when there is no corpus luteum, no progesterone, what happens? That the unopposed estrogen makes the endometrium hyperplastic because it has the ability to cause the cells come in a hyperplastic state. They increase in their number and thick. Alright. Now, what causes polycystic ovarian syndrome? Chronic anovulation we have discussed. Then comes increased testosterone. It's basically androgen and increased luteinizing hormone. Luteinizing hormone basically comes from the brain, and it is responsible for ovulation to occur. Because ovulation is not happening, so constantly the signal is increased. LH is being raised, and when it is raised, it acts on the ovarian theca cells for the production of androgen and suppress the sex hormone binding globulin by 15%. The combined effect leads to mildly elevated levels of free testosterone, resulting in hirsutism. Most of the cases with PCOS have, they have so many hairs on the upper lip, on the jawline, on the neck, and maybe other places as well. And why? Because there is testosterone level is increased, and this testosterone level, why it is increased? Because there is no ovulation, LH is raised, theca cells are producing androgen. Ovarian theca cells produce androgen, but in a minimal number. But when there is a surge of LH and it's coming, in a big number, so thereafter, naturally androgen level increases, and it increases as we can see from the theca cells of the ovary. And sex hormone binding globulin, this is a globulin, a protein which is present in blood, and it is responsible for combining with the free androgen. But when this globulin is 50% decreased, the result is this, that the free level of androgen is raised in the blood naturally. So free level of androgen is responsible for the hirsutism that we visualize in our patients. Okay, now ovarian enlargement. As the number of follicle is increased, on TVS more than or equal to 12 peripheral cysts in a necklace-like pattern in each ovary. High androgen prevents follicular development, inducing premature follicle atresia. These follicles are in various stages of development, and atresia
along with stromal hyperplasia and thickened ovarian capsule. It results in the ovaries that are bilaterally enlarged. So it's self-explanatory that as the number of follicles increase, because the follicles tries to grow and try to get the ovum out of it, but it become arrested. Atresial state come over there. So another try to be grow and it's also faces the atresia. So in that way, the number of follicles keep on increasing and they get their growth and their maturity, their natural maturity keeps on arresting. Atresia is there, so automatically the number of follicles in one ovary increases and that may reach up to 12 or more than 12, leading to overall enlargement of the size of the ovary. I think that's clear and we can discuss it later on. So this is the picture. Here we can see the reproductive system of a female. This is the normal ovary in which we can see that this is a Graafian follicle. It tries to get mature because of the gonadotropins that are coming in a normal number and therefore these follicles keep on growing and here it has reached to its final state and thereafter the ovum comes out of it and it gets converted into the corpus luteum and the corpus luteum starts producing progesterone. This is normal picture, but there you can see atresia is over there, follicle gets arrested in its growth, ovulation is not over there. Ultimately, the number of the follicles in the ovary keeps on increasing in a necklace-like pattern and the overall size of the ovary gets increased. Right. So here we can see the gynecological risk of PCOS. Hyperandrogenism from the theca cells of the ovary, as we have already discussed, clinically or biochemically. Result is infertility. Oligomenorrhea is there, menstrual dysfunction is there. So these are the very common complaints that we keep on listening on a routine basis. Because the incidence of polycystic disease in the foreign countries is just 6 to 25%. That's a very low percentage. But in our underdeveloped countries, the percentage in 2015 it was 50%. And after 2015, now it's been 2023. This incidence has almost reached 70%. And every fifth patient in your clinic, if you see 5 patients, out of these 5 patients, 1 patient is with polycystic ovarian syndrome. So its incidence in underdeveloped countries is much raised, and the reason is lifestyle and sedentary lifestyle. Okay, so here we can see the long-term health risks of PCOS: metabolic syndrome, diabetes mellitus, heart disease, high cholesterol, endometrial conditions like hyperplasia, endometrial carcinoma, sleep apnea, and depression, anxiety. Because there is a lot of increase in the weight as well, and that weight leads to finally depression as well. You can see there is hirsutism, acanthus nigricans. This is the blackening of the skin back on the back of the neck or upper part of the shoulder, and this is the lifestyle, junk food and all that, leading to polycystic ovary, obesity, and skin changes. There is hair loss. A lot of hair loss in polycystic ovaries observed. On the scalp, there are sort of baldness, and on the face and rest of the body, there are so many hairs. It's all because of the androgens. Okay. PCOS has no cure. Live with it. Because if your patient is well motivated, even if most of the time you don't have much time to counsel. Welcome, Dr. Fozia Sabir. Welcome. Hello, beta. एक चेयर दे देना उधर, एक चेयर दे आती है तो हमारे पास समटाइम्स इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको कहें कि भाई अब तुम बैठ जाओ हमारे पास और हमने तुमसे लंबी बात करनी है, देखो तुम ये मत खाया करो, ये मत किया करो, ऐसे ना किया करो, तो बहुत बात लंबी हो जाती है। तो ज़रा पेशेंट लाइन में लगे हैं, तो काउंसलिंग का टाइम जो है ना किसी भी बिजी डॉक्टर के पास, खास तौर पर डॉक्टर तैयबा जैसी डॉक्टर के पास तो बहुत ही कम होते हैं। क्यों तैयबा जी के कुछ तो उसका तो फिर वो ये है कि उसमें ये होता है कि वो अपने लाइफस्टाइल को कंसिडर नहीं करते।
अगर हम उन्हें कुछ हद तक मोटिवेट कर दें कि भाई तुमने देखो आज से तुमने जंक फूड छोड़ देनी है, ये जो बैठी रहती हो ऐसा नहीं करना, जरा एक्टिव हो जाओ, साइकिलिंग करो, जंपिंग करो, वॉक करो, कुछ नहीं करना तो कम से कम अपने घर के बाहर की सड़क पे 2 चक्कर लगा लो, कुछ तो करो भाई, ठीक है। अगर हम उसे मोटिवेट करें, उसे खाने का समझाएं, उसे लाइफ पैटर्न के बारे में, सेडेंटरी हैबिट्स छोड़ने का कहें, तो कुछ देर के लिए वो मोटिवेट हो जाती हैं, वो छोड़ देती हैं। अब अगर हम उन्हें समझ दिखा दें कि देखो ऐसा होना चाहिए तुम्हें भाई, तो वो कुछ देर के लिए तो जज्बाती हो जाएगी, वो कहेगी ठीक है यार मैं करती हूँ, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद जब उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हार्मोनल ओबेसिटी इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली चीज नहीं होती, ये बड़ी टफ होती है। इसमें स्टबर्न किस्म का जिद्दी सा फैट होता है जो ऐसे चिपकता है बंदे को कि छोड़ने की वो बस बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि उसका वो हार्मोनल बैलेंस हर एंगल से आपने करेक्ट नहीं किया। तो जैसे कि वो अभी हम फीमोवा की बात करेंगे, मायोनासिटॉल का एक बड़ा प्रॉमिसिंग रोल जो है इसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कंसिडर नहीं करेंगे, आपका पेशेंट उस तरह से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कुछ देर तो वो चलते हैं उस रूटीन के, उसके बाद वो अपनी रूटीन फिर से चेंज कर देते हैं। रिजल्टेंटली जैसे ही वो दोबारा जंक फूड पे और इस तरह की सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे पहले से भी मोटे हो जाते हैं, और वो कहते हैं यार हम नहीं ठीक हो सकते। तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कि आज दवाई खा ली है, आज एक्सरसाइज कर लिया, तो बस अब जिंदगी भर के लिए ये काफी है। लेकिन ये जिंदगी भर के लिए काफी नहीं है। उनको यही यकीन दिलाना है कि पीसीओएस हैज नो क्योर, लिव विद इट, इसके साथ जियो और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज मत करो। So management rules of PCOS. Go ahead and follow the basic 5 steps. Now we are coming for the 5 steps. So our first step is irregular bleeding. अगर वो तो है बहुत कॉमन है, जाहिर है जब हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके लिए हमने कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी। अगर ये किसी बच्चे की, क्योंकि इसका थोड़ा सा जेनेटिक भी इसमें है, वो प्री डिस्पोजिशन इसमें जेनेटिक भी होती है, तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन में ये यंग बच्चियों में भी बड़ी जल्दी आ रहा होता है, जैसे कि आपको पता है। और हमारे प्रोफेसर अक्सर हमें कहा करते थे कि जितनी जल्दी इसको ट्रीट करोगे ना, जितनी जल्दी इसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डालोगे, उतनी जल्दी रिस्पांस आएगा, और वो द अर्लियर द बेटर। इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग मत किया कि ये जी हम फिर करेंगे, अभी नहीं देते बाद में देंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। हिर्सुटिज्म का भी यही ट्रीटमेंट है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और अगर जरूरत पड़े तो स्पाइरानोलेक्ट्रॉन को उसके साथ, ये पोटेशियम स्पिरिन डाययूरेटिक है, उसको साथ में मिला सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर रिटेंशन इन लोगों में होती है, वेट भी ज्यादा होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए हम उनको मेटफॉर्मिन और इनोसिटॉल जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके बाद इनफर्टिलिटी के लिए जाहिर है हमें ओव्यूलेशन इंड्यूस करनी है, क्लोमिफेन सिट्रेट, और उसके साथ ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन्स जो है वो हम उनको दे सकते हैं। और ओबेसिटी के लिए हम उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए करेंगे काउंसिल। तो उसके बाद है is PCO caused by poor diet? High sugar may be one of the inducer by causing intestinal flora imbalance, chronic inflammation and insulin resistance. Anti-inflammatory diet like olive oil, leafy green vegetables, tomatoes, fatty fish may ease the symptoms. Is PCO genetic or lifestyle? In most cases it is genetically acquired, and poor lifestyle choices make them more susceptible to develop. Do I need to use contraception in the absence of periods in PCOS? Yes. Use birth control by yes if you don't want pregnancy. Can I lead a normal life with PCOS? Yes. By healthy weight, a healthy diet and an active body are needed to deal with PCOS and to lead a normal life ahead. तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम पीछे भी देख चुके हैं। ऑलिव ऑयल के बारे में वो एक जगह पे मैंने वो पढ़ा भी था, सुना भी था कि 2 नेशंस ऐसी थी जिनमें बहुत लंबा लाइफ स्पैन देखा गया, उनकी जिंदगियां बहुत लंबी, बड़ी देर देर तक, वो 90 साल 100 साल, दादा भी जिंदा परदादा भी जिंदा, पोता उनको दिखता रहता है कि इसमें से एक मेरा बाप है, एक मेरा दादा, एक मेरा परदादा है, तो इस बहुत लंबी जिंदगी, ये बहुत खुशकिस्मती की बात। तो उन्होंने देखा कि यार कुछ अरब लोग ऐसे हैं जिनमें लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, और कुछ वो जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है ना वहां पे, तो उन्होंने कहा कि इनमें ऐसी क्या चीज है कि ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा लाइफ स्पैन, लंबा लाइफ स्पैन एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी क्या रीजन? तो उनमें एक तो थी उनमें ऑलिव ऑयल का यूज था, जैसे कि अरब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मेरे साथ बेहतर बता सकते हैं क्योंकि
क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने अरब कंट्रीज में काफ़ी टाइम गुजारा। तो दूसरा वो फिश का इस्तेमाल, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 का जो मौजूदगी थी, ओमेगा 3 एंड ऑलिव ऑयल। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी को एक लॉन्गेविटी जो है ना, वो अल्लाह तबारक तआला के फजल से आपको मिलती है, और इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रखता है। ये इसको यूं कह लें कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन इस सेंस में है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडीज, क्योंकि लोगों में ये चीज़ देखी गई है, ये उन्हें मिली है उनको। तो इनका इस्तेमाल रूटीन की डाइट्स में, ऑलिव ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कभी भी आपको मोटा नहीं करता, क्योंकि फैट में कन्वर्ट नहीं होता। इसकी ये बहुत बड़ी ब्यूटी है। कोई भी ऑयल है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो चर्बी को बढ़ाता है, मोटा कर देता है, लेकिन ऑलिव ऑयल किसी को मोटा नहीं करता। इसको तो अक्सर लोग वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है, मरीन से आज ही सुना है कि वाजिद साहब ने भी कोई डाइट शेयर की है, तो शायद वो इस पे एग्री करेंगे। चलें जी, तो बस थैंक यू। और इस पे अगर कोई डिस्कशन में आना चाहे तो उसमें यह है कि चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे मुल्कों में प्रेवलेंट कंडीशन है, तो हमारी जितनी भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हैं वो रूटीन में ये सारे केसेस देख रही हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप सबके हमें कमेंट्स मिलें। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी ना, ये ऐसे पूरी हम लाइन में हैं। तो पहले मैडम सुल्ताना बैठी हैं, तो डॉक्टर साहब आप अपना एक्सपीरियंस हमारे से शेयर करें। First of all, we should know that इस PCOS में होता क्या है। ये डिस्टर्ब कर देता है आपके हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को। ये आपको पता है जो कम्प्लेक्स सा एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो रेजिस्टेंस